Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are happy, healthy and safe at your home. My name is Sadia Munawar and I am your mathematics teacher from Divisional Public School and Intermediate College. In this topic, you will cover how to divide 6-digit number by 10 and its multiples, along with division of 6-digit numbers with numbers up to 3 digits. Let's start the first topic, that is division of numbers by 10 and any of its multiples. Please remember that to divide a number with 10 and any of its multiple, you will remove the zeros and move the number towards right. Let's understand this concept with the help of a 6-digit number. That is 283,000 divided by 10 gives us 28,300. बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, जो आपके पास 10 था उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस थे? 1. सो ये नंबर ऑफ जीरो है, ये कैंसल आउट कर देगा 1 जीरो को, जो कि यूनिट प्लेस पे है 283,000 के. तो आंसर आपके पास बाकी जो नंबर बचा है वो क्या बचेगा? 28,300. सिमिलरली when you divide the same number with 100, you get 2,830. Now what has happened here? The two zeros in the 100 have cancelled out the two zeros at the unit place and the tens place of the number 283,000. So what is remaining is 2,830. Similarly, if you divide the same number with 1,000, you get 283. जो thousands के 3 digits हैं जीरो के, वो कैंसल आउट कर देंगे जो 3 zeros हैं 283,000 के. तो आपके पास क्या बाकी बचा है? 283. Students, please note this important point in your notebook. Similar to multiplication, each term in division has a special name. First one is dividend. Dividend is the number to be divided. Then comes divisor. Divisor is the number that divides. Then comes quotient. Quotient is the result of division. And lastly we have remainder. Remainder is the number which is left over after division. Let's understand this with the help of an example. Here, as you can see, students, 27 is called the dividend because this is the number which we are dividing. 5 is called the divisor, which is written on the left side of the dividend. The 5 at the top is called the quotient, which is the result of the division. And the 2 at the last is called the remainder. This is the number that is left over after the division. Now we will solve the example for division. Solve this by long division. 40,575 is the dividend and 15 is the divisor here. You all know that we have to multiply 15 with some number until we get 40 or some number that is smaller than 40. So, as you know that 15 times 1 is 15 and 15 times 2 is 30. But 15 times 3 is 45. तो चूंकि 45 आपके पास 40 से बड़ा हो जाएगा तो हम 15 times 2 यूज करेंगे. So 15 times 2 is 30. Now you will subtract 30 from 40. You get 10. अब हम नेक्स्ट नंबर जो है उसको क्या करेंगे? 5 को ड्रॉप डाउन. तो हमारे पास हमारा नंबर क्या बन जाएगा? 105. अब हमने 15 का टेबल अगेन देखना है कि कौन से नंबर पे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास 105 या उससे छोटा नंबर आएगा. तो 15 times 7 is 105. तो हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों नंबर्स को, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0. नेक्स्ट अगेन हम क्या करेंगे? 7 को ड्रॉप डाउन. तो हमारे पास अब आप देखें 7 ड्रॉप डाउन करने के बाद मेरे पास नीचे जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है वो क्या बन रहा है? 7. अब मुझे इसको डिवाइड करना है 15 के साथ. तो क्या मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये मेरे पास मेरे डिवाइजर से छोटा है. तो मुझे या तो इसको इक्वल होना चाहिए या फिर
बड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसी स्टेप में जो मेरे डिविडेंड का लास्ट डिजिट है 5, उसको भी 7 के साथ जो है वो ड्रॉप डाउन करवाऊंगी, लाइक सो। एंड आफ्टर, चूंकि आपने एक ही स्टेप में दो नंबर्स को यहाँ पे ड्रॉप डाउन करवाया, तो जब भी हम एक ही स्टेप में अपने डिविडेंड से दो नंबर्स नीचे ड्रॉप डाउन करवाते हैं, तो हमें ऊपर अपने पास क्वोशंट में 0 ऐड करना होता है। After adding 0 in your quotient, you will now multiply 15 with some number until you get any number that is smaller than 75 or equal to 75. So you know that 15 times 5 is 75. Now 75 minus 75 gives us 0, which is the remainder. So our answer is 2705, remainder 0.